Hello students, welcome to my channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we will cover the literature part of 2019 CUCET exam, the Central University's Common Entrance Test, which is an all India test and is being conducted for admission to various integrated undergraduates, postgraduates and research programs in several central universities and state universities. Let us start with question number 26. Question number 26. Which of the following involve dramatic portrayal of personified qualities and values? The correct answer is morality plays. Morality plays a type of dramatic allegory performed in theatre in which the protagonist is met by the personifications of various moral attributes. Next question, question number 27. Expressions like battle, sweat and whale road are examples of which technique popular in Old English literature? The correct answer is कैनिंग. ऑप्शन नंबर बी. कैनिंग एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लैंग्वेज में एक कंपाउंड को प्रेजेंट किया जाता है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, जैसे कि फर्स्ट लेडी वर्ड हम यूज करते हैं फॉर द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल इंग्लिश टेक्स्ट इज नॉट अ ड्रीम एलिगोरी? तो नॉट पर आप ध्यान दीजिएगा एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर गैवेन एंड ग्रीन नाइट. ड्रीम एलिगोरी, जिसको कि ड्रीम विजन भी कहा जाता है, इज प्रेजेंट इन पियर्स प्लॉमन बुक ऑफ डचेस विच इज बाय जॉफ्री चॉसर एंड पियर्स प्लॉमन विच इज बाय विलियम लैंगलैंड एंड पर्ल. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रीम एलिगोरी. Next question is which of the following poem was written by Christopher Marlowe? The correct answer is option number D, Hero and Leander. Hero and Leander is a poem by Christopher Marlowe that retells the Greek mythological story of Hero and Leander, and after Marlowe's untimely death it was completed by George Chapman. George Chapman जो कि एक English dramatist, translator और poet थे. Who was the first English poet to introduce the division of quatrains in a sonnet? The correct answer is option number B, Henry Howard. English sonnet और Shakespearean sonnet भी हम कहते हैं इसको. Instead of octave and sestet, it uses the concept of quatrains, which was developed by Henry Howard. Next question. With which author is the prose style euphemism associated? The correct answer is John Lyly. Option number A. Next question. Which of the following play does not feature the appearance of ghost? The correct answer is option number C, King Lear. इसमें से बाकी सब प्लेस जो भी हैं उनमें ghost किसी ना किसी फॉर्म में अपीयर होता है बट King Lear में नहीं है, तो दिस बिकम्स द राइट आंसर. Next question. In which of his plays does Shakespeare use mistaken identity involving twins as the central plot? The correct answer is Comedy of Errors. Option number B. Comedy of Errors एक ऐसा प्ले था जिसके अंदर 2 pairs of twins यूज की हैं विलियम शेक्सपियर ने, जिसकी वजह से कॉमेडी और मिस्टेकन आइडेंटिटीज दोनों प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is an allegorical poem celebrating the Tudor dynasty? The correct answer is option number C, The Fairy Queen. The Fairy Queen जो कि 1590 का टेक्स्ट है एक, and it is written by Edmund Spenser. 1590 का है ये, and it is moral allegories of the earlier Tudor period. Next question. Which of the Shakespeare's character is described as a goodly apple rotten at the heart? The correct answer is option number D, Shylock. In Merchant of Venice, Antonio describes Shylock as a man who looks good on the outside but who is evil on the inside, that is villain and rotten at the heart. Next question. Which figure of speech does Shakespeare use in the expression to take arms against the sea of troubles? The correct answer is option number B, that is mixed metaphor. Mixed metaphor एक speech है, figure of speech जिसमें metaphoric sentence होते हैं, taking a verbal device that implies comparison with a wholly different kind of subject. Hamlet यहाँ पर एक example है हमारा. Hamlet said he might take arms against a sea of trouble. That means he was basically speculating about using a weapon against his life when he says against sea of troubles. Next question.
Which classical playwright was a major influence on the popular revenge tragedies of the late 16th and early 17th century? The correct answer is option number C, Seneca. Revenge tragedy, sometimes we call it revenge drama as well, is a genre in which the principal theme is revenge and revenge's fatal consequences. Seneca was a prominent playwright of the 1st century, famous for helping shape this particular genre of revenge tragedy, and he is famous because of his 10 plays that are written in same fashion. Next question. The plays of which classical dramatist are the source of the concept of Oedipal complex? The correct answer is option number A, सोफोक्लिस. एडिपल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, एक टर्म है जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने यूज की थी सबसे पहले साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखाने के लिए, और इसको माना जाता है कि ये सोफोक्लिस के प्ले एडिपस रेक्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड एक सब्जेक्ट है, इंस्पायर्ड एक थीम है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, व्हाट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी? करेक्ट आंसर इज plot. According to Aristotle, the plot is the underlying principle of a tragedy as it is very soul of it. Next question. Which of the following is a revenge tragedy? The correct answer is option number B, Duchess of Malfi. Duchess of Malfi Jacobean revenge tragedy है, written by English dramatist John Webster, and it was written around 1612 and 13. Next question. Which literary text is the source of the term malapropism? The correct answer is option number A, The Rivals. Malapropism is a unique literary device in that it has its origin in a specific comedic play, The Rivals, in a specific character, Mrs. Malaprop. इन्हीं के नाम की वजह से इस टर्म को malapropism कहा जाता है. Next question. With whom did Shakespeare collaborate to write The Two Noble Kinsmen? The correct answer is option number A, John Fletcher. The Two Noble Kinsmen is one of the latest of Shakespeare's play written in collaboration with John Fletcher. Next question. In Marlowe's play, which university does the eponymous Dr. Foster study at? The correct answer is option number D, Wittenberg University. Dr. Foster, जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो का एक बहुत ही फेमस प्ले है, और इसमें दिखाया गया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, विच ही अर्न्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग. वन मोर वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर वॉज एट यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, दैट इज हैमलेट. Next question. Which of the following poets is best known for his dramatic monologues? No doubt the correct answer is Robert Browning, option number A. Robert Browning को ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर या किंग भी बोला जाता है. सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं इसमें माई लास्ट टचेस एंड पोफेरियाज लवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच प्ले डज द कैरेक्टर ऑफ मॉस्का अपीयर? The correct answer is option number B, Volpone. Volpone एक कॉमेडी है बाय इंग्लिश प्ले राइट बेन जॉनसन, जिसको कि सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था 1605 में. And the play basically revolves around some beastly character, and Mosca is one of them. He is the one who continually executes Volpone's ideas around the society. The next question is about a character, Lady Wishford. Lady Wishford किस प्ले का पार्ट है? द करेक्ट आंसर इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो कि विलियम कॉन्ग्रीव के द्वारा लिखा गया है और 1700 में इस प्ले को प्रीमियर किया गया था. शी इज अ वेल्दी विडो, mother to Arabella Fennel and aunt to Millamant. Millamant is the female protagonist of this particular play. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे मैं अपने कई वीडियोस में कई बार कवर कर चुकी हूँ. विच शेक्सपियरियन प्ले डिड जॉन रॉयडन अडैप्ट फॉर हिज ऑल फॉर लव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. ऑल फॉर लव जो कि 1677 का एक प्ले है, इसको अडॉप्ट किया था ऑफिशियली जॉन रॉयडन ने फ्रॉम दी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बाय विलियम शेक्सपियर. Next question, which of the following is
नॉट अ फीचर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। तो यहाँ पर भी आप नॉट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिडिल क्लास मोरालिटी। रेस्टोरेशन कॉमेडी एक फॉर्म ऑफ कॉमेडी हुआ करती थी रेस्टोरेशन टाइम के ड्यूरेशन में ही। रेस्टोरेशन टाइम जो कि 1660 से 70 तक का था, 1700 तक का था। एंड इट डील्स विद द कोर्टशिप रिलेशंस, सेक्सुअल इंट्रीग्स ऑफ मेन एंड women living in a sophisticated upper class society, and it relies too much on its witty dialogues as well. तो सब कुछ कवर हो रहा है except for the option number C, middle class morality. Next question. In which poem does John Donne compare lovers to stiff twin compasses? The correct answer is option number B, A Valediction Forbidding Mourning. In his poem A Valediction Forbidding Mourning, John Donne uses the simile of stiff twin compasses to describe two lovers who are physically parted, physically distant, but are united in their souls. Next question. Which figure of speech does Milton employ in the phrase darkness visible to describe hell? The correct answer oxymoron, क्योंकि यहाँ पर दो contradictory ideas एक साथ आए हैं। oxymoron एक ऐसा figure of speech होता है जिसमें दो contradictory ideas एक साथ लिखे हैं, जैसे कि darkness and visible। अगर कुछ visible है तो darkness कैसे है, darkness है तो visible कैसे है। Next question. To which genre of writing does Milton's Lycidas belong? The correct answer is pastoral elegy, option number A. Lycidas एक पोइट्री है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, जो कि उन्होंने 1637 में लिखी थी अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग को डेडिकेट करते हुए। दिस इज पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी इस तरीके की पोइट्रीज होती है जिसमें डेथ, रूरल लाइफ, विलेज लाइफ, कंट्री साइड एंजॉयमेंट ऑफ स्पेसिफिकली शेपर्ड्स, ये दिखाया जाता है। तो पेस्टोरल एलिजी स्पेसिफिकली फीचर शेपर्ड्स एंड कंट्री साइड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इजी वन. Whose death P.B. Shelley mourned in his poem Adonais? The correct answer is option number C, John Keats. Next question. In which text have the concepts of fancy and imagination been most extensively theorized? The correct answer is option number B. Option number B, that is Biographia Literaria. 1817 की ये बुक है। 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया में एस.टी. कॉलरिज ने डिस्टिंग्विश किया था फैंसी और इमेजिनेशन इन दो कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is acclaimed to be first English women to make a living from writing? The correct answer is option number C, Ephra Behn. Ephra Behn एक ऐसी इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, ट्रांसलेटर और फिक्शन राइटर थी रेस्टोरेशन एरा की, जिन्होंने शुरुआत की थी फीमेल अर्निंग की। As one of the first English women to earn her living by her writing, she broke all the cultural barriers, conventions, and served as a role model for the later generations of women authors. Next question. Who among the following is a famous diarist? The correct answer is option number D, Samuel Pepys. Samuel Pepys एक administrator थे Navy of England के and a member of Parliament as well. He is very famous for the diary that he used to keep with him. The first part of the video, 56 question onwards आप लोग second video में देखेंगे. Please continue watching the channel. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.